श्रवण सुंदर नाम गणपते, श्रवण सुंदर नाम गणपते, ज्ञाननाथ गजाननम, ज्ञाननाथ गजाननम, विघ्नहरणं गौरीनन्दन, विघ्नहरणं गौरीनन्दन, चढ़त मोदक भुजाचार विभूषणं, श्रवण सुंदर नाम गणपते, ज्ञाननाथ गजाननम, विघ्नहरणं गौरीनन्दन, विघ्नहरणं गौरीनन्दन, चढ़त मोदक भुजाचार विभूषणं, श्रवण सुंदर नाम गणपते। I don't know what happened. My goodness, what was that? You heard that? Explosion ho gaya. I don't know what happened. Let's see. You could hear that. Okay, let's see what's going on. It stopped. Oh, I know what happened. ये एडिट कर लेना अभी. We can't post this. Okay. So this particular जो Ganesh Stuti hai, it is written by, the composition is by somebody whose name is also Gajanan. His name is Gajanan Yaji. He wrote this composition, very beautiful one. And वैसे संस्कृत में है, but it's not difficult to understand the words. If you pay attention to each individual word, even if you don't know Sanskrit very well, वो clear हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं. श्रवण यानी सुनना, सुंदर नाम गणपति, ज्ञान नाथ, नाथ यानी ओनर, गजानन तो नाम है, विघ्न हरणम जो विघ्न हरता है, गौरी नंदन गौरी के जो पुत्र है, चढ़त मोदक मोदक चढ़ते उसको उनको, भुजाचार चार भुजा है उनकी, विभूषणम it suits him, decorates him. जड़ित मुकुट कटिपीत सोहत, मूषक वाहन दुख विदायक, मूषक वाहन दुख विदायक, जयति जय जय जयति जय जय, जयति जय जय जयति जय जय, जयति जय जय, श्रवण सुंदर नाम गणपते, ज्ञाननाथ गजाननम, ज्ञाननाथ गजाननम,
ज्ञाननाथ गजाननम। So this story that I'm not sure somebody, I'm not sure if we have met them on Open Door, but they are in the group. They posted this very nice story. So, and after it got posted, there was one or two questions कि इसका मतलब क्या है? So, because it's a little bit, the ending especially वो थोड़ा twist है. So it's hard to know exactly what is being said. So let me read this story. थोड़ा सा हिंदी में भी बताइएगा, स्टोरी को समझ में आई नहीं अच्छी तरह। हाँ, पहले मैं जैसी दी है इन्होंने इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ फिर बता दें. So a businessman sent his son to learn about the secret of happiness from the wisest man in the world. The young man wandered through the desert for many days and finally came upon a beautiful castle high atop a mountain. It was there that the wise man lived. So rather than finding a saintly man, though, our hero, on entering the main room of the castle, saw a hive of activity. Tradesmen came and went, people were conversing in the corners. A small orchestra was playing soft music, and there was a table covered with platters of the most delicious food. The wise man conversed with everyone, and the boy had to wait for 2 hours before it was his turn to be given the man's attention. The wise man listened attentively to the boy's explanation of why he had come, but told him that he didn't have time just then to explain the secret of happiness. He suggested that the boy look around the palace and return in 2 hours. Meanwhile, I want to ask you to do something, said the wise man, handing the boy a teaspoon that held a few drops of oil. As you wander around, carry this spoon with you, but don't allow a single drop of the oil to spill. The boy began climbing and descending the many stairways of the palace, keeping his eyes fixed on the spoon. After 2 hours, he returned to the room where the wise man was. Well, said the wise man, did you see the Persian tapestries that are hanging in my dining hall? Did you see the garden that it took the master gardener 10 years to create? Did you notice the beautiful parchments in my library? The boy was embarrassed and confessed that he had observed nothing. His only concern had been not to spill a drop of the oil that the wise man had entrusted him. Okay, then go back and observe the marvels of my world, said the wise man. You cannot trust a man if you don't know his house. Relieved, the boy picked up the spoon again and returned to his exploration of the palace, this time observing all the works of art on the ceilings and the walls. He saw the gardens, the mountains all around him, the beauty of the flowers, the taste with which everything had been selected. Upon returning to the wise man, he related in detail everything he had seen. But where are the drops of oil that I entrusted to you? Asked the wise man. Looking down on the spoon he held, the boy saw that all the oil was gone. Well, there is only one piece of advice I can give you, said the wisest of wise men. The secret of happiness is to see all the marvels of the world and never to forget the drops of oil in the spoon. So, छोटा लड़का है, उसको पिताजी ने बताया कि अगर सुख की का जो सीक्रेट क्या कहते हैं, रहस्य, रहस्य, राज 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 या रहस्य, रहस्य जो है सुख का, शांति का, सुख का, स्पेशली आनंद का रहस्य क्या है, आनंद का रहस्य क्या है अगर जानना है तो इस एक जो ये बहुत ही महान आदमी है उनके पास चले जाओ और उनके पास से सीख के आ जाओ. तो उसके पास गया वो बंदा और
महल था अच्छा सा, और कुछ समय बाद रुकने के बाद मिला उसे और कहा कि 2 घंटे रुकना पड़ेगा मुझे मिलने के लिए, लेकिन तब तक आप घूमिए फिरिए यहाँ पर, लेकिन मैं ये चम्मच देता हूँ जिसमें कुछ तेल है, उसमें से देखना कि आप रखिए इसे और इसमें से एक भी बूंद गिरे ना। तो वो घूमता है, आता है और कहता है कि देखा, ये सब इतनी सारी सारी अच्छी बातें हैं इस महल में, देखी आपने? बोला नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो इतना इस पे मेरा ध्यान इस तेल पे था कि एक भी बूंद नहीं गिरे, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो कहते हैं कि तुम अच्छा ठीक है, एक बार और जाइए, लेकिन इस बार जो सारी बातें हैं दुनिया में, ये मेरी दुनिया में, वो देखो। तो बोलता अच्छा चलो, एक और चांस मिल गया। वो जाता है और सब कुछ ठीक से देखता है, वो पेंटिंग्स है, वो किताबें हैं, वो गार्डन है, फूल है, सब कुछ ठीक से देखता आ जाता है। और वो पूछता है उसे कि जो तुमने देख तो लिया सब? हाँ बोला, मैंने देख लिया, सब डिटेल में डिस्क्राइब किया, लेकिन ये वो जो तेल की चम्मच दी थी उसका क्या? बोला हाँ हाँ, मैं तो इतने देखने में सब लग गया कि ये तो सारा गिर गया मेरे हाथों से। तो उसने कहा कि यही रहस्य है जीवन के, जीवन में आनंद चाहिए तो सारी दुनिया देख लो, सारा आनंद जो बाहर है वो देख लो, लेकिन ये जो तेल की बूंदें हैं उन्हें गिरने मत देना। तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि ये तेल की बूंद क्या क्या, व्हाट आर दे सिग्निफाइंग, व्हाट इज दिस, तेल की बूंद का इतना क्या महत्व है कि हमें इसको बचाए रखना है? सो दिस इज वन ऑफ द, जो जो एक रहस्य है, जो समस्या है, जो एक डायकोटमी है, जो एक पैराडॉक्स है, जो सालों सालों से लोगों को ये 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 बात ठीक से समझ में नहीं आती, और ये प्रश्न हमेशा अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से ये हमारे जीवन में आता ही है। और वो क्या है? इट इज द डायकोटमी बिटवीन so many things. So ऐश्वर्य और वैराग्य, one dichotomy. The inner world and the outer world, another dichotomy. Nothing matters, everything matters, another dichotomy. डाइकोनॉमी क्या है? Dichotomy यानी द्विशा, दो, कुछ दो चीजें जो है, जो डिवाइड द्वंद्व, करती है। द्वंद्व जैसे। हाँ, मतलब द्वंद्व, डुअलिटी, द्वंद्व, द्वंद, द्वंद, डुअलिटी। बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, फिर छोटी बातें और बड़ी बातें, और ये छोटी बातें और बड़ी बातें हैं, दैट इज द मेन। तो सीक्रेट क्या है? सो व्हाट इज दिस ड्रॉप्स ऑफ ऑयल? सो ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एक्चुअली, कंपेयर टू द पेंटिंग, कंपेयर टू वो जो महल में पेंटिंग है, वो जो गार्डन है, जो फ्लावर्स है, इतनी वो बुक्स है, रेयर किताबें हैं, उसके मुकाबले ये कुछ बूंदे तेल की क्या मायने रखती है? उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। यानी ये तो बहुत छोटी बात है कंपेयर टू व्हाट इज देयर। तो रहस्य यही है कि छोटी बात और बड़ी बात जो आती है जीवन में, छोटी छोटी बातें और बहुत बड़ी बड़ी बातें, दोनों है हमारे जीवन में। और आनंद का रहस्य यही है कि हम जो बड़ी बड़ी बातें हैं, the big things in life, we fully enjoy, we fully embrace, but at the same time, happiness can last and be there only if at the same time we are aware and taking care of the little things.
छोटी छोटी जो बात है उनको भी आप देख रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, उनको उनको जगह दे रहे हो कि नहीं आपके लाइफ में. So these are the little things in life, and only if both are present, दोनों को आपने संभाल के रखा है अगर, तब जाके आनंद का अनुभव, आनंद का रहस्य यही है कि दोनों को संभालो, दोनों को संभालो. आप सिर्फ छोटी बातों में उलझते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं ना, छोटी सी छोटी बातों में इतने उलझे हैं कि कोई बड़ी बात उनको पल्ले नहीं पड़ती. They are not concerned about anything that is the bigger picture in life, which is important in life, which is, about dreams, about traveling, about exploring. They are not concerned. They are only worried about small, small things. Small, small things. Time पे खाना खाया कि नहीं, आप कितने बजे नहाए थे. छोटी छोटी बातों को लेकर ये लाइफ आई कैन उनकी रिलेट, आई कैन रिलेट. छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उलझे रहते हैं कि जैसे जो लड़का था वो पहली बार सिर्फ छोटी बातों के उसका ध्यान था, एक बूंद भी नहीं गिरे, लेकिन उसमें उसने कुछ देखा ही नहीं. ना फूल देखे, ना पेंटिंग्स देखी, ना किताबें देखी, ना गार्डन देखा, ना कुछ. क्या जिए तो क्या जिए. तो कुछ लोगों की ये हाल होता है. Anamika says, you mean all wives? Yeah, I think the guys can relate to some of this in some ways. I don't know. But मैंने वो पोस्ट किया था ना उस दिन, या हर्षा मुझे प्लीड कर रही थी कि आप नहाने जाए. मैंने बोला गा के सुनाओ तो जाता हूँ, तो गा के सुनाया सही उन्होंने. एनीवे, तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें, क्या फर्क पड़ता है, उनको लेकर सारी जिंदगी उसी में चली जाती है. मतलब अगर कहीं अच्छी बड़ी पार्टी में गए आप, कुछ लोगों से मिले, कुछ अच्छी अच्छी बातें की, अच्छा अनुभव हुआ, और कुछ लोग पार्टी के बारे में पूछो तो यही पूछते हैं क्या खाया उधर. क्या था, खाना क्या था. यार, खाने का कौन सा इतना महत्व है. तो ये एक एक्सट्रीम है कि ये छोटी छोटी बूंदों वाली जो ये चम्मच है, उस पे ही उतना ध्यान है कि ये द वर्ल्ड इज पासिंग यू बाय एंड यू आर स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ. यू आर ओनली स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ. कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि जिनको हम छोटा समझते रहते हैं उसमें निहित बड़ा आनंद होता है, और जिसको नहीं, बड़ा उसी पे समझते रहते हैं उसमें उल्टा होता है. नहीं, उसी पे आ रहे हैं ना. दैट इज द होल मैसेज ऑफ दिस स्टोरी. उसी पे तो आ रहे हैं. तो एंड देन देयर आर द अदर एक्सट्रीम ऑफ द सिचुएशन. उतने महान महान बातों में उलझे रहते हैं, महान इतनी बातों में उलझे रहते हैं कि उनके कपड़े का ठिकाना नहीं है, बटन फटा हुआ है, बटन निकल गया है, या यू नो जो भी है, दिस हु आर सो कॉट अप. किसी ने एक जोक बताया था एक बार कि हाँ, हाउ डू यू बैलेंस इन योर मैरिज लाइफ. ओके, हमारा बहुत बहुत अच्छा तालमेल है. इट्स वेरी बैलेंस्ड. It's a 50-50 division of everything. She takes care of things like बच्चों की स्कूल की फीस भरी कि नहीं, जो ग्रोसरीज चाहिए थी, दाना पानी वो ठीक से आए कि नहीं, खाना बना कि नहीं, बच्चों ने होमवर्क किया कि नहीं, वो सब वो संभाल लेती है. और मैं जो है मैं दूसरे प्रॉब्लम्स मैं संभाल लेता हूँ. अच्छा, आप कौन से प्रॉब्लम संभाल लेते हैं. किसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए आज, ये रशिया यूक्रेन में वॉर ठीक है या नहीं, वो कौन जीतेगा, वो सब जो बातें मैं संभाल लेता हूँ. और वो जो है वो ये फीस और खाने वाने की बातें
संभाल लेती है. So, but that's just a joke. But this is it. This is actually the dichotomy. ये जो बड़ी बातें हैं, जो बता रहा है वो, कि I'm just already, you know, all this great stuff. I'm taking care of all of that. Whereas, so दोनों जो है वो एक्सट्रीम है. तो और वही जो हुआ वो लड़के के साथ दूसरे बार जब वो निकल पड़ा, कि उसने पेंटिंग देखी, फ्लावर्स देखे, लाइब्रेरी देखी, किताबें देखी, लेकिन आया तो वो तेल की बूंदें तो गिर गई थी, पता भी नहीं कि कहाँ गई. सो रहस्य, वो जो बुजुर्ग थे, वो जो जो विद्वान थे, उन्होंने यही बताया कि अगर आप दोनों को संभालते हो, दोनों को संभालने की आपने अगर क्षमता है, छोटी भी बातें और बड़ी भी बातें. Did you smile at the person? Let's say you're going for a very important meeting. बहुत बड़ी मीटिंग है, आपने बहुत तैयारियां की है, सब कुछ है, और जाते जाते जो दरवाजे पे शायद सिक्योरिटी गार्ड है, उसको, उसकी तरफ आपने देखा कि नहीं, देखा तो स्माइल किया कि नहीं, गुड मॉर्निंग कहा कि नहीं, छोटी बात है. तो आपने वो नहीं किया और उसी में बड़ी बातों में उलझ गए, देन ऑल्सो यू हैव लॉस्ट इट. और आपने सिर्फ छोटी बातें की और बड़ी बातें भूल गए, तो भी आप चूक गए. So this is the message of the story, that both are important, and when you honor both of them, because जो छोटी लगती है वो वही छोटे छोटे पलों से तो बड़ी जिंदगी बनती है, और वो छोटे छोटे पल आपने अगर मिस कर दिए, then you missed life. So take, if we can take care of the small and the big things in life, balancing it both, holding the balance, then happiness is yours, then anand is natural. You cannot have, you know, your kids are not properly taken care of, or the house is a mess, and you are saying, oh, I don't know, I am in the quest for divine. अरे भैया, आपके बच्चे भी तो डिवाइन है, उनका संभाला नहीं, घर भी डिवाइन है, उसको नहीं संभाला. So if you really mean, then the small has to be included. And it is दूसरा जो ये द्विशो, हाँ, मैं वो वर्ड याद कर रहा था, द्विशो. याद है वो जो श्लोक था, क्या था? द्विशो जहि रूपम देहि. रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि. द्विशो जहि, जो डुअलिटी है, उसको, उस पर विजय पाना है. डुअलिटी में से वननेस, where the small and the big both merge and you are able to see both as divine, then that is the magic. That where the magic is. दोनों डिवाइन है, both are divine. And same thing other जो द्वंद्व है, like inner world, outer world. What is more important, inner world or outer world? Some people are only in the inner world. They have no clue about the outer world. They may be very mahan in their meditation and in their bhakti or in their gyan. They may be extremely good. But electricity bill bharne ka ठिकाना नहीं है. You know, so outer world is a mess. Then again you are missing. And opposite, you are just caught up in making money, then doing this and doing that, and then, you know, whatever. Going to parties, but you have no clue about the inner experience, which is so much more important than that outer experience. So यहाँ गए तो भी
फंस गए, यहाँ गए तो भी फंस गए. And that either end of the spectrum, you are losing your source of joy, your source of ananda. So this is the secret as per this interpretation. Inner world, outer world, दोनों को हमें साथ लेकर चलना है. And that is the open door, this direct path, oneness का यही message है. How do we find that magical balance where the outer world and inner world both are one? Not that even that we stop seeing the difference between the two, and we treat both as equally wonderful, equally divine. And that's where all the magic is. That's where all the magic is, when both are present, both. So, and that is this whole practice. You know, the retreat that we went to, retreat was a training ground for this only. I don't know, many of you were there at the retreat that we went, not all of you, but did you notice the attention to detail that we had given to the space, the physical outer world, the flowers on the stage and the decoration and the everything arranged beautifully, and the sound, जो बाहर की दुनिया है, उस पर कितना हमने ध्यान और कितना प्रेम पिरोया था. Yes, all those who were at the retreat, did you notice? Yeah. Yes, So the grub was also good. and the food was also good. And the Yeah. swagatam was And the so swagatam of Pandit. Right. So the outer world, we were continuously making sure that the outer world is beautiful. We were at the lake and we were at, enjoying the morning, enjoying the beauty of the night and the sounds of the birds and so many, all outer. And at the same time, the whole point of all of that was the inner. The outer क्या मतलब ही क्या है अगर if you're not understanding the inner message behind it, of expressing love, expressing joy, expressing beauty, expressing togetherness. So that is why that retreat, it was so magical. And not just retreat, life itself, we don't have to wait for retreats for life to be magical. All moments are magical. So, and that magic happens when you are able to explore the world and not allow a drop of oil to fall. Somebody sent me a line that said, life is a performance without rehearsals. इसमें कोई rehearsal जैसी कोई चीज ही नहीं है. No rehearsal. There's only life. Direct. सब कुछ direct चल रहा है. So, and so similarly, the जो भजन्स है या जो chanting है is also an outer expression of the inner peace. That particular abhi jo ye Rupam Dehi, that one, the peace and the calmness and the silence जो इसमें प्रकट होता है. लेकिन प्रकट किस में होता है? प्रकट होता है sound में. That inner silence is expressed in sound. You cannot express the inner silence without sound. So, so one of the venues that we were exploring for the chanting. So, by the way, for those of you who are not aware, let me display one picture. Oh wait, I have to share the screen. So, join us in creating a divine chant energy field on Sunday, 2nd October 2002,
10 a.m. to 11:45 p.m. at Prempuri Ashram in Mumbai. So everyone, 2022, no? 2022, everyone is invited. So Nancy, this is the one. तो पुणे से लेकर सूरत तक जो भी है open door, everyone should be here in person. All people from Pune to Surat, Pune, Mumbai, Surat. उसके बाहर से भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, और जितनी दूर से आप आएंगे, more and more welcome, more and more wonderful. So there are one or two people coming from Indore, जो अपने पांडे जी, वो दीपक और हर्षिका जी जो है अपने टोयोटा वाले. So दीपक they are, राजपाल. हाँ, Rajpal. So they are coming, and then of course Anamika is coming all the way from Gurgaon. But so like this, so उतनी दूर से अगर लोग आ सकते हैं तो डेफिनेटली पुणे और सूरत तक तो कोई बहाना नहीं हो सकता. आपको यहाँ पहुंच जाना है, be there by like 9:30, early निकल जाना. And Nancy, you coordinate with Himanshu and whoever other Surat people are there, and all of you can come. Pune, I don't know who is here from Pune, but of course we'll be posting this this announcement very soon. But please call those numbers on the screen on that poster and register your name, because we need a count. The place is not very big. We only have about maybe 150 or so spots. तो सभी को नाम लिखवाना है. In that there are Anamika ji's and Jennifer ji's numbers. So उसमें आप नाम लिखवा देना कितने लोग आ रहे हैं वगैरह वगैरह. Also, the Soham TV channel is going to run promo of the event in the next 2-3 days. वो live मतलब they will be posting the information. So who knows how many people might call, I don't know. We may run short even on the 150 or 200. So, but we'll have to stop at 200. So fatafat, you need to register your name so that we don't get in a situation where people who are audience or viewers of Soham TV, they start calling and register then. So make sure you call and fix your name. And bring family, friends, Nancy, sabko le aao. And so point is, what is, so funny story which happened is, when we were looking for a place, one of the options I thought of is jo pyramid hai, Patriji, if you have heard of, who does the pyramid meditation. He has these big pyramids. You sit inside the pyramid, and because of the shape of the pyramid, it is supposed to draw the vibrations such that your meditation three times more powerful. 3 times more powerful than your normal meditation. So मैंने सोचा क्यों नहीं हम, there is a pyramid in Mumbai also. I don't know how many of you know, but Mulund में एक pyramid है. It's the base is 50 feet by 50 feet, and it goes up some 50-60 feet. इतना बड़ा pyramid है. So I was calling them to see if we can have our chanting session in the pyramid instead of in a hall. So the person tells me, why do you want to chant? Why do you want to do bhajans? You are God. You are God, and why you want to call God? Why do you have to chant a mantra? You are God itself. मैंने कहा यार ये तो मैं सब सुनाता हूँ, ये मुझे सुनाने वाला कौन आ गया? So I was just laughing. आपने बोला नहीं कि I am God. How you are telling me God? Patriji used to play so much flute himself. I know. He used to play flute. It was not just silent meditation. So why play the flute? But I didn't want to get into I just laughed and I said, yes, you are absolutely right. Everything is divine. There is no need for mantras, and there is no need for chanting and bhajans. You are the divine, and you are so right. But point is, inner and outer, आनंद का अगर अनुभव करना है,
then that inner love that we are feeling for divine, that needs to find an expression, needs to find a way, a channel, a path. So the next closest thing to silence is music. या तो फिर बस चुपचाप बैठे रहो दिन भर रात भर, yeah, that is okay. But then if you want to express, silence must come out in sound. And what better sound than music? That is why Patri ji itna flute bajate hi the. Always he used to play the flute. He used to sing also. So that outer expression of this inner joy. So basically, that is the whole message of that story. That the outer expression of inner, the big things and the small things, the nothing, the everything. Nothing matters and everything matters. On a wider Actually, picture. you know, I got your whole story wrong. Now I'm understanding it. I Achha. thought अंदर आत्मा है और बाहर दुनिया है. So अंदर हाँ. का बड़ा है और बाहर का छोटा है. नहीं, I it's had not like taken that. it that way, totally Correct. different. Correct. Yeah, I think this is a more closer to our experience, that everything is important. Like we say, nothing matters. In a large scale of things, yes, nothing matters. Larger scheme of things, nothing matters. But at the level at which you and I are living, everything matters. So that's the beauty and that's the fun and that's the joy. I mean, हम अगर कहेंगे या क्या अकबर, क्या शाहजहां सब गए, इतने बड़े बड़े महल थे, इतना सब था, वो सा, कहाँ है आप आज? कुछ नहीं है. It's nothing matters. It's true. But while you are Akbar and while you are Shah Jahan, you have to live like everything matters. Or in our own life, let's say if it's a wedding or something like that. At that point, nothing matters. Yeah, I mean, 100 साल बाद किसको याद है ये शादी, ये क्या, कौन आया था, कौन नहीं आया था, क्या खाना खिलाया था, किसी को पता नहीं है. It doesn't matter. But today, when the wedding is there, कहाँ बैठेंगे लोग, क्या पिएंगे, कैसे कंफर्टेबल रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या म्यूजिक सुनेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, कौन आएगा पहले, क्या, all those little things, important, very, very important. Wonderful. ऐसा ही कुछ साकार और निराकार में भी होता है ना. निराकार का अपन उसका अल्टीमेटली वी आर ऑल निराकार, लेकिन Correct. उसका जो विग्रह बना लेते हैं जब हम, तो हम अपना श्रद्धा, प्रेम, वो सब सारा का सारा एक दूसरे उस रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो इकट्ठा आपने बताया करके था ना, वो शिल्पकार होता है वो. या सब कुछ इकट्ठा करके. हाँ. वो क्या था, वो सॉन्ग था ना, 16 one sec, what was that song? वो कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली आऊं छोड़ के तेरे ही लिए लाई मैं पिया 16 साल के सावन जोड़ के प्यार से थामना डोर बारीक है 7 जन्मों की ये पहली तारीख है डोर का मैं हूँ एक सिरा और तेरा है दूसरा जुड़ सके बीच में
कई तड़प है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। तो 16 साल के सावन जोड़ के लाए हैं। मतलब पूरा जो भी बाहर का है वो पूरा मतलब जम के लाना है, एक्सप्रेस करना है, अनुभव करना है सारे, तभी जाके। और जो मेरे दिल को दिल बनाती है वो धड़क दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की जब धड़क यानी उसकी जब आउटर एक्सप्रेशन आती है तब जाके वो दिल दिल बनता है, वरना दिल ही क्या है। So that is the whole, such a beautiful story it is. I really loved it. कि ये हम भूल जाते हैं। ग्रेट। तो वो भी एक लाइन है ना संजय जी, छोटी बातें, हाँ हाँ, छोटी छोटी बातें। या ना 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 na 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 na। कभी कभी तो आके दिखा रे मुझको जगाया रातों ने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी यादों के साए टरर नशीली बातों में। या हम गा तो लेते हैं, देखा कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के। ये 7 रंग वाले सपने हैं तभी जाके कुछ कहानी बनती है, तब जाके कुछ बात बनती है। So unnecessarily we get caught in this. So yep. Great. तो पुणे से कोई है क्या आज यहाँ पर? Anyone is here from Pune? Pune. चाय जुनेजा जी कहाँ से है? हाँ, महिब जुनेजा, पहली बार देख रहे हैं इनको आप। यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अनम्यूट कर सकते हैं वो। हाँ, एवरीवन इज एबल टू ना? हाँ, ओके मैंने आज कुछ किया ही नहीं। ओके। मैं पुरुषोत्तम जी से Some लग people गई। are there but they are not there. Yeah. आज मुझे कुछ नहीं बोलना है। कुछ साकार में विद्यमान है, कुछ निराकार में। महिब जुनेजा जी, वंदना Hello everyone, it's me, Mahib's mother, Deepa Juneja. I joined from his account. Hello sir. I'm Anamika's friend. Sorry? Anamika's friend. Oh, okay, wonderful. What's the first name again? Deepa Juneja. Deepa Juneja. Okay, wonderful. Welcome. So good to hear you. Yeah, thank you. I don't know if you were there since the beginning of the story or not. No, I joined late actually. Acha, no problem. Yeah, You can. in the middle. Yeah, she prays a lot about you. So I got really,
to hear you. Sure, Pleasure. sure. Most welcome. Yeah, you can hear the story on the recording, and then where you'll get the full story. Definitely. आपके लिए flashback वाली कहानी बन जाएगी. You see the end first, and then the hero goes in flashback and says what happened. Right. तो ये finale आपने अभी सुन लिया, और लेकिन अभी जो उसकी बात है वो आप बाद में देख सकते हैं. Finale is so nice that I'm really looking forward to see the beginning. Sure, sure, please. Yeah, and we have a lot of other videos. Do keep coming. What do you do? I'm a homeopathic physician. Oh, wonderful. Ji. Okay, great, great. Very nice. Thank you. My sister is also homeopath. She's not here today, but usually she is. Okay. Yeah, now she's retired, but yeah. Okay. Great. So, any questions or thoughts? Any questions you have, Deepaji, that we can take before we close for the day? Maybe next time, Sanjivji, I would first like to hear it properly and try to understand. You know, it's then definitely Sure. I will approach you for my curious. Certainly. Very good. Wonderful. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Good. So please, I will be forwarding this flyer on the group today for the event on October 2nd. Spread it far and wide. Let it reach the far corners of the universe. Nainaji, where do you live? Mumbai or Pune? Mumbai. Mumbai, sir. Acha. So you can definitely easily come. But Pune, I'm looking for people so that we have some musicians. This is going to be a live music event with some wonderful musicians. We'll have guitars, we'll have harmonium, of course, we'll have a cello. I don't know if you all know what a cello is. Looks like a big violin, inverted. ऐसे बजाते हैं उसको violin की तरह, लेकिन बहुत बड़ा violin जैसा लगता है. So we've invited one Russian lady who lives in Mumbai. She's going to be playing the cello. And of course, we have the tabla and cajon and drums and percussion and duff from Kavitaji's friend. So it's going to be an amazing event. You know. So, you know, his Duffly, he's like a one-man show. He'll make the whole hall rock just with the Duffly. You can just give him 10, 15 minutes, whatever time.
You can do a medley of bhajans and you'll have everybody dancing. Right. Yeah, we'll see how it goes spontaneously. But don't miss it, because this experience, you know, what got me going on this is I saw this Krishna Das chanting in a church, and all these Americans just really just blissing out on Om Namah Shivaya and all of this stuff. And it's like इन लोगों को इतना समझ में आ रहा है और इनका इतना आनंद ले रहे हैं. What about us? हम यहाँ से शुरू हुआ है और हम ही भूल गए इसको. And we are not making use of so much joy that's available for nothing. वो कोहिनूर हीरा you कुछ might भी. start a movement. The I know. youngsters are looking for an outlet. Are looking for an out. That's what. So especially pass forward this to all the youngsters. Let them come. Let there be standing room only. Let us fill up that place. And let there be a big demand for more, and there is already a demand for more, because the demand is there and the supply isn't there. There's no one really doing this kind of high quality music and kirtan and chanting. कोई है ही नहीं इंडिया में जो कर रहे इतनी scale पर. So let's make use of it, and so spread it to bring your kids, bring your grandkids, and your friends. And of course, Vedosi will also be there. So she will, have her friends who are all the younger generation. So, but don't miss it. If you're in Mumbai, don't miss it. If you're in Surat, don't miss it. If you're in Pune, don't miss it. And if you're on this earth, don't miss it. Simply. And if you're on this earth, don't miss it. And anywhere in the solar system, don't miss it. पांडे जी, आप भी सोचिए. पुरुषोत्तम जी, देखो ट्रेन ब्रेन पकड़ के आ जाइए. क्या यहाँ कोई ना कोई द्वंद है ना, द्वंद वाला द्वंद है, दोनों को साथ में लेके चल रहा है. Of course, no doubt. But host तो कर लेंगे सबको. Anyone who comes, there's plenty of homes in Mumbai for all of you, so you can all stay with them. And पुणे में वो अपने कोहली है ना, कोहली जो अपने रिट्रीट में थी, वेरी एक्टिव लेडी. याद क्या नाम है? Kohli was there. Jayashree is also there in Pune. So yeah, some of you can call up the individual people that you have a good connect with. Unko, just inspire them to come and let them register. Okay, great. So see you all next time. Kabir is saying hi to everyone. Kabir. Say hi. Kabir. Hello, say hi. So naughty. I know. Great. Okay, see you all on Thursday. Thursday, I want to talk about something else which someone has asked me about. So many things that irritate us, bother us about, especially people who have been abroad. उनको जो comparison हो जाता है यहाँ आके कि अरे यार सीधी सी बात है, सादी सी बात है. How can we not take care of this now? It's very irritating and annoying. So I want to talk about how do we deal with this? How do we rise above, transcend? How do we make it better? So stress and anxiety जो लोगों को अनुभव होती है, वो anxiety से कैसे बाहर आ सकते हैं? We'll talk about that on Thursday. Okay, great. Thank you. Love you all. Thank you for being here. Thank you for being the kind of people who are into exploring this, being in this inquiry, asking this inquiry, being in this exploration is just as important as all the answers in the world. And so thank you for being that soul. Thank you.